Okay, question number 11. A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm. This is battery. Okay. Is being charged by 120 volt DC supply. इसको चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पर DC सप्लाई लगाई और ये है 120 वोल्ट. 120 volt is very high, so how the current will flow? This will go like this in the circuit. And we have put a resistance here, external resistance. This external resistance, the battery is from A to B, and this is external resistance, and they say using series resistance of 15.5 ohm. Okay, no internal resistance of this battery is given. We take it is negligible. Okay. What is the terminal voltage of the battery during the charging? टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज हमको निकालनी है. ये काम हम पहले कर चुके हैं. This is 8 volt, this is 120 volt. What is the net potential in this loop? 120 in this direction, plus 2 minus, and plus 2 minus 8 volt in this direction. So net voltage is 120 minus 8. This is what? E2 minus E1. This is equal to the current flowing in it, I, multiplied by all the resistances in the loop. The resistance here is 0.5 and here the resistance is 15.5. So 15.5 plus 0.5, this comes to be 16. So, and this is 112, and this is I multiplied by 16. So I is equal to 7 ampere. This is the current flowing in it. Now what they ask us is what is the potential difference across the cell. Again the question is what is the terminal voltage of the battery during the charging? Terminal voltage is from this terminal to this terminal. Okay, we know the current. We have to find out VA minus VB. So we go for the same technique. VA here how much it will be? If this voltage is VA and this plate is 8 volt down, so what is voltage here? VA minus 8. VA minus 8. थोड़ा सा और आगे जाइए. Here the current flowing is I, so I multiplied by 0.5, that will be another potential fall. ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इससे ये वाला पॉइंट कितना पोटेंशियल नीचे है, कितना पोटेंशियल डाउन है? आंसर I इंटू आर. तो यहाँ पर आकर हमको जो पोटेंशियल मिला वो कितना मिलेगा? VA माइनस 8 जो यहाँ था उसमें से और कम हो गया. VA माइनस 8 माइनस I इंटू आर 0.5. Okay, so where we have reached now, this potential is VB. So what is the equation we get? We get the equation VB is equal to VA minus 8 minus 0.5 into I, and I is how much? 7. So we get here VA minus 8 minus 0.5 into 7, and this is equal to 7.5, 3.5, this is 11.5,
Okay, 11.5 you bring here, 11.5 VA keep here, this VB transfer on this side, so this will be VA minus VB. 11.5 volt. What is VA minus VB? VA minus VB is the terminal potential difference, और यही हमको निकालने को बोला है, VA minus VB terminal potential difference. How much we have calculated? 11.5. So यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? 11.5. जबकि हमने बैटरी कौन सी लगाई है? 120 वोल्ट की, पर यहाँ पर 120 वोल्ट इसको नहीं मिलता. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस. So our second question is, what is the purpose of having this external resistance? ये अगर नहीं होता तो I की वैल्यू कम नहीं होती और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता. उतने ज़्यादा पोटेंशियल में इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी दैट दिस बैटरी विल गेट डैमेज्ड. इसलिए स्लो करंट हमेशा चार्जिंग के लिए अच्छा होता है. जितना कम करंट होगा, जितनी स्लो चार्जिंग होगी, उतना बैटरी भी सेफ होगी, बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी और उतना परफेक्ट चार्ज भी होगा, उतना ज़्यादा चार्ज जाएगा. और ये चीज़ याद रखिए अपने मोबाइल के चार्ज के लिए. जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, बड़ा जल्दी चार्ज करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है. दैट शोज दैट वी हैव फ्लोन द करंट वेरी फास्ट, और करंट हमेशा फास्ट कराना बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. केमिकल रिएक्शन अनइवन होते हैं. सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर स्मॉलर करंट, लेट इट टेक मोर टाइम. ओके, सो what will be our answer? Two answers. Number one, the terminal potential difference is 11.5 volt across the battery. Number two, the resistance is used to limit the current so that battery does not get damaged. These are our two answers. Is the point clear? Again, एक बार और मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ. हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमको आता है. किस तरह से? एक तरफ का पोटेंशियल VA मानेंगे, पोटेंशियल कम करते जाएंगे, VB तक पहुंचेंगे. तो VA से VB तक कितना पोटेंशियल कम हुआ, ऐसे निकलेगा. लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? I की जरूरत पड़ेगी. तो पहले हम इस लूप में I निकाल लेते. I कैसे निकालते हैं? नेट पोटेंशियल इन दिस. आप लूप लॉ लगाएंगे तो भी यही चीज आने वाली है. लूप लॉ नहीं लगाएंगे तो इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि नेट पोटेंशियल, ये ऐसे करंट फ्लो करा रहा है, कितने पोटेंशियल से? 120 से. ये ऐसे करंट फ्लो करा रहा है, कितने पोटेंशियल से? 8 से. तो ये ज्यादा हैवी है, इसलिए ये करंट फ्लो होगी, लेकिन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 120 माइनस 8. दिस इज द नेट पोटेंशियल. ओके, करंट I फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस 0.5 प्लस 15.5. दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस. यहां से हमको I की वैल्यू मिलेगी. उसके बाद यहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया. आप ब्रांच से ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, VA माइनस VB, और यहां से हमने ऐसे डाउन किया तो यहां से 8 वोल्ट यहां कम हुआ और यहां पर I इंटू R. सो 8 वोल्ट प्लस I इंटू R इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज VA माइनस VB. आप इस तरीके से कर सकते हैं. जो तरीका आपको समझ आए उससे आप करिए. यू विल गेट दिस आंसर. Okay, now let's go to the next question. Okay, it's very simple and preliminary question. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 gives a balance point of 35.0 सेंटीमीटर. ये किस सेल की बात कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर में आपने देखा है ये ऐसे, हम एक यहां पर बैटरी लगाते हैं और यहां पर हम दो सेल लगाते हैं. वन गिव्स E1, अदर गिव्स E2, और यहां से गैल्वेनोमीटर जाएगा. Now the question reads, in a potentiometer a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length. इसमें से कौन सा सेल बैलेंस पॉइंट दे रहा है? आंसर है ये सेल देता है. ये सोर्स सेल है, इसकी वोल्टेज नहीं बताई जाती किसी भी क्वेश्चन में.
battery. Okay, so when they say that cell is giving a balanced point, that means this cell is giving a balanced point or this cell is giving a balanced point. So first cell. A cell gives 1.25 volt. This is 1.25 volt. This gives a balance point at 35 centimeter. 35. So L1 35 and E1 12.5 volt. Okay, a cell of 12.5 volt, balance point 35. If the cell is replaced by another cell and another cell E2, the balance point shift to 63. Shift to 63. That means L2 is 63 centimeter. Now, what is the EMF of the second cell? तो हमको simply जो थ्योरी में हमने रिजल्ट पढ़ा है उस रिजल्ट को याद कर लेना है. एक बार इसको बैलेंस किया, एक बार इसको बैलेंस किया, सेम सेटिंग्स आर देयर. सो वी हैव इक्वेशन E1 upon E2 is equal to balancing point for the first divided by balancing point for the second. There are 4 quantities, 3 quantities are given to us. So we can very well find out this E2 is equal to E1 into L2 upon L1. Let's put the values. This is 12.5, 63 and this is 35. And this gives the answer. Okay, this is 1.25. There is a mistake. 1.25, 1.25, and here again this will be 1.25. This we will do the calculation and it comes to 2.25 volt. So this cell has EMF equal to 2.25 volt. This is our answer. Okay, now we go to the next question, and that is the number density of free electron in a copper conductor is this much. How long does an electron take to drift from one end of wire to its other end? Okay, so this is 3.13. In a number density of free, the number density of free electrons n, it is given to us 8.5 into 10 to the power 28. 8.5 into 10 to the power 28. Okay. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? There is a wire, this is 3 meter. How long it takes from this point to this point? Time taken is equal to T. Okay. The area of cross section of the wire, area of cross section of the wire is given 2 into 10 to the power minus 6. 2 into 10 to the power minus 6 meter square. Any other thing? And it's carrying a current of 3 amperes. Most important, it's carrying a current 3.0 ampere. These are the data given to us, and what we are supposed to find out. How long does an electron take? Time taken T. This we are supposed to find out. Now, how do we find out time of travel? Time of travel
in kinematics is found out by time is equal to distance upon speed. An electron travels from this point to this point. The distance is given 3 meters. It is known to us. Is the speed given? No, speed is not given. We know when electric field is applied, then speed of the electron is known as drift velocity. The electron have got two type of velocities. One is thermal velocity, which is very fast, 10,000 km per second. Other is drift velocity, which makes electric current. So that speed we need here, because that forms the electric current. So here distance is equal to 3 meters, and here we need drift velocity. But drift velocity is not given to us. Whatever is given, do we have any relation of these quantities with drift velocity? Answer is yes, we have a relation. What is that relation? We know that current is equal to N, E, A and drift velocity. This gives drift velocity is equal to current divided by N, E and A. N, charge on electron, and area of the conductor. N is the number density. Number density given, area given, A is a constant we know, I is also given to us. So we can very well find out drift velocity. How much this will be? This is current is equal to 3. N is given to 8.5 into 10 to the power 28. E is 1.6 10 to the power minus 19. A is given to 2 into 10 to the power minus 6. 2 into 10 to the power minus 6. These are quantities of drift velocity that we put here. Okay, so this is again 3 upon, drift velocity is 3 upon, this upon we shift here, and this comes to be 8.5 into 1.6, 8.5 into 1.6 into 2 into 10 to the power 28, 28 plus minus 19 minus 6 minus 6. This is our answer for what? Time, and this time will be in second. Here there will be cancellation. 19, 6, 25. This is 10, 3. So this is 8.5 into 1.6 into 2 into 10 to the power 3. And when we were 27200 seconds. So this is the time when the last electron reaches this point, or this electron reaches this point. So this is our answer. Right, this is the correct answer. You can convert it into hours. Now we go to the next question. That is 3.14. Okay, it is a question of additional exercise. तो थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है. ये अर्थ है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए. अर्थ की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर के नीचे के लेवल पर यानी अर्थ की सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर. हर एक मीटर स्क्वायर में इतनी चार्ज डेंसिटी है
10 to the power -9 कूलम. इट्स वेरी स्मॉल बट इट इज देयर. ओके, इसका ये मतलब है कि इसके पास कौन से चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए इसके पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है. इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर, आयनोस्फीयर और सबसे ऊपर की जो लेयर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं. और ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज दोनों अपने बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, व्हाट विल इट गिव? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 400 kV, 400,000 वोल्ट. इट इज अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है. वी आर नॉट कंसर्न. They have given 400 kilovolt is the potential difference between the two. Okay, potential difference होने से पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, from higher potential to lower potential, from positive to negative potential. तो ये चार्ज जाते हैं. ये जो चार्ज का मोशन होता है we call it electric current. और वो इलेक्ट्रिक करंट कितनी है? 1800 एम्पियर. लगातार एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ टोटल करंट 1800 एम्पियर आती रहती है. क्या ये करंट बहुत ज्यादा है? तो आंसर है अर्थ भी तो बहुत बड़ी है. उस पूरी अर्थ में अगर 1800 को डिवाइड करेंगे तो छोटी करंट होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी. एनीवे, ये उसकी क्वांटिटी है. 1800 एम्पियर नजदीक में आती है. अगर 1800 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो ये पूरा का पूरा चार्ज चलकर अर्थ पे आ जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. हमको मालूम है कि अर्थ का नेचर का नेट चार्ज 0 होता है. तो इसलिए इसके पास जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है. पूरा चार्ज नीचे आ जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. क्या ऐसा होता है अर्थ में? आंसर है अर्थ में ना एक लगातार प्रोसेस चलती रहती है. ये वाले सारे चार्ज एटमॉस्फेयर में से नीचे आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बादल आपस में टकराते हैं और उनके कारण फिर से यहाँ चार्ज पैदा होते हैं. तो ये चार्ज रिप्लेनिश होते जाते हैं. तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि दोनों तरफ के चार्ज 0 हो जाए. ये हमेशा चार्ज इधर आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जाते रहते हैं और थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बिजली चमकती है, उसके कारण आयोनाइजेशन होता रहता है और यहाँ पर चार्जेस पैदा होते रहते हैं. तो हमेशा इतना पोटेंशियल डिफरेंस बना ही रहता है और हमेशा चार्ज यहाँ गिरते ही रहते हैं. करंट भी फ्लो हो रही है, उसके बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है. लेकिन हमारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट की गई. उन्होंने ये बोला कि सपोज ये रिप्लेनिश नहीं होते तो एक बार में जितने चार्जेस इसके पास हैं ये सब नीचे आ गए 1800 एम्पियर करंट बना के. तो कितने टाइम में इस सरफेस को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे? टाइम की बात कहां से आ गई? इसलिए कि नीचे जितने भी चार्ज हैं ऐसे एक एक चार्ज आएगा और इसको जब वो चलकर आएगा तो चार्ज और करंट क्या इसमें रिलेशन होता है? व्हाट इज दिस करंट? हमको ये नहीं बताया गया कि कितना चार्ज आ रहा है, क्या बताया? करंट कितनी. तो ये हमारा टेस्ट है कि क्या करंट और चार्ज का रिलेशन हमको मालूम है. डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन क्यू आई एंड टाइम? यस, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. This is our very fundamental equation for the electric current, charge flowing per unit time. This is electric current. Okay, now what we should know, what we are supposed to find out, how much time. ये हमको फाइंड आउट करना है तो हमको क्या क्या मिलना चाहिए? आंसर है Q एंड I. ये दो क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए. यहां पर हमको I दिया गया है 1800 एम्पियर. तो अब हमको क्या पता होना चाहिए? Q, चार्ज. और चार्ज का एक फॉर्मूला यहां पर हमको क्या दिया है? चार्ज डेंसिटी. डू यू नो एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज? यस, या. Q is equal to charge density sigma multiplied by total area. So this we can write as I is equal to sigma into area upon time. Okay,
So how much is time equal to? Time is equal to sigma into area upon current, and here is the sigma, 10 to the power minus 9. This is coulomb per meter square. Already in SI system we don't have to do any change. Area of the earth surface, the area is, we know area is 4 upon 3 pi r cube. This is 4 upon 3 pi r cube. R should be in meters. Here it is 6.37 into 10 to the power 6 meter, and we have to make, no, sorry. This I have taken volume. We have to take surface area, and formula for surface area is 4 pi r square. So this I should write as area 4 pi r square. So this will be 4 pi and square of this r, 6.37 and 10 to the power 6 square, that is 10 to the power 12. This is r square, this is pi, this is 4, and this whole is area, and this is density divided by current. Current is 1800 ampere, 1800. This is also in SI system. So this gives us time, and this time will be in what unit? Second. Okay, now it's a simple multiplication. You can do it. 6.37 into 6.37 into 3.14 into 4 multiplied by 10 to the power minus 9 plus 12, that is 10 to the power 3, and here 1800, divide by it and you get the answer. Please do the calculation and tell me. So this is approximately 283 seconds. आपका भी आया? Correct. So this 283 second will be the time, approximate time. Okay, so this is test of our knowledge, whether we know the formula for current, charge, and charge related to charge density and area. That's all. Then area of the earth is given, charge is given, all other quantities are given, but it's a very small numerical, though it is written very large and appears to be very large. The next question is 3.15. A 6 lead acid type secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance this much, are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. There are 6 cells. Each cell has got certain internal resistance. Okay, I will just make a shortcut, make a break here, and 6 cells. Okay, these are connected here, and it is given each has EMF 2 volt. Okay, internal resistance R is equal to 0.015 ohm. It is given to us. Then okay, joined in series to provide a supply to resistance of 8.5 ohm. सबको सीरीज में जोड़ा और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया. दिस इज 8.5 ohm. दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. इससे इसको सप्लाई किया. ओके, नाउ दिस इज द सिचुएशन. द क्वेश्चन इज what are the current drawn from supply, what are the current drawn from the supply and its terminal voltage. दो चीजें हमको निकालनी है.
A और B के बीच की वोल्टेज, that will be known as terminal voltage. दूसरा, what is the current I in this loop I? This we are supposed to find out. Okay. Now, how much is the I? I is equal to total potential difference divided by total resistance in one loop. Okay, that is okay. Let's go from here. 2 volt. How many cells? 6 cells. If there are 6 cells in series, what should be the potential difference between A to B? That is 6 into 2, 12, divided by resistance. Let the current go from here. This is 8.5. Then 0.015 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total resistance is 8.5 plus 0.015 into 6. This is the total resistance and this gives us current. Can we solve it? This is 6 to the 12 upon 8.5 plus 0.09. So this comes to 12 upon 8.59. This is value of I. Okay. Now this is the one answer we got. We will get the value in decimals. Then how do we get the potential difference across AB? The answer is either we calculate here or we calculate from here. So here it is easier because there is only one resistance. इधर से निकालना आसान है क्योंकि एक रेसिस्टेंस है और उसकी करंट अभी अभी हमने पता लगाई है. So what is potential difference between A to B? This is equal to I into R. This is I. And how much is R? 8.5. This is our answer of potential difference. Please do the calculation and tell me. It is 1.4 volt approximated. So 1.4 sorry ampere. 1.4 ampere is the current. And when you solve this, this comes to be, it's very close, 11.9 volt. So these are the two answers, current and terminal potential difference. So terminal potential difference is slightly less than 12 volt because of the internal resistances. Okay. Now we go to the second part of it. The second part says, B part, a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt. This is a cell 1.9 volt. This is the EMF of the cell. Okay. And a large internal resistance 380 ohm. Very large resistance 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? इसमें से हम कितनी करंट ले सकते हैं? तो आंसर है मैक्सिमम करंट हम इससे तब ले सकते हैं जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मिनिमम हो. एंड हाउ मच इज द मिनिमम रेसिस्टेंस? आर मिनिमम इज 0. इन दैट केस what will be the current in this? I is equal to EMF applied divided by total resistance, 0 plus 380. That is R plus R. This is EMF is 1.9 and this is R plus R, 380. And this is 1 upon 200, or we can say this is equal to 0.005 ampere. Yeah, 0.05 ampere.
Now 0.05 ampere is such a small current that it cannot draw any car. Okay, so let's close it here. 005 was the correct one. Okay, देखते हैं. This is 1 upon 200, 0, 0, दो 0, third 0 में 5, 005, 0.005 ampere. This is the maximum current. This is because of internal resistance. So now you can think how important is the internal resistance. इसलिए हम लोग अगर छोटी बैटरी 12 वोल्ट की लेके आते तो उससे हम कार का स्टार्टर नहीं चला सकते, बिकॉज इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज वेरी हाई. बड़ी बैटरीज होने से क्या होता है, वी हैव पैरेलल सेल्स, और पैरेलल सेल में रेसिस्टेंस कम हो जाता है. जो आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ रेसिस्टेंस कितना कम है और यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत हाई है, इट कैन नॉट गिव ए लार्ज करंट. सो 2 wires of equal length, one aluminium and other copper, have the same resistance. दोनों का resistance R same है. Which of the 2 wire is lighter? Lighter means by mass, which is lighter. Hence explain why aluminium is preferred over copper wires. दोनों का मास निकालेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें पावर केबल के लिए किसको परचेज करना चाहिए, whether it is copper, whether it is aluminium. We know copper is very costly and aluminium is very cheaper than the copper, but we don't know how much aluminium we have to consume, so we will find out by this. Okay, हमें निकालना क्या है, कहां पर लिखा है, this, which of the 2 wire is lighter. हमें दोनों का मास चाहिए, तो मास ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू डेंसिटी. Well, let's write it density D multiplied by volume. Volume we can write area multiplied by length. So mass is equal to density multiplied by volume. Volume is area of cross section into length. This gives the mass. If it is aluminium, then density of aluminium, area of aluminium and length of aluminium. And if it is copper, then mass of copper is equal to density of copper, area of copper, length of copper wire. Okay, now what is given to us? The given is 2 wires of equal length. That means length of aluminium and length of copper are same. Okay, have same resistance. That means their resistance is same resistance. What is the formula for resistance? In the terms of specific resistance, this is rho. We know R is equal to rho into L upon A. For aluminium, it is aluminium, aluminium, aluminium. For copper, it is rho copper, length copper, area copper. Okay, but they say these two are same. Length is same. So this is equal to this. If we do the cancellations, R is equal to R. That means this is equal to this. In that, length is also equal. So rho upon AL, this is rho of aluminium. 2.63. So 2.63 upon area of aluminium is equal to 1.72. 1.72 upon area of copper.
multiplied by 10 to the power minus 8, this is multiplied by 10 to the power minus 8, cancel. ये एक इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं हम इस इक्वेशन को? दिस इज एक्चुअली सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप देखिए हमें क्या चाहिए. Which of the two wire is lighter? Means we want mass of aluminium divided by mass of copper. अगर ये ratio, if this ratio is less than 1, then this is lighter, this is heavier. If it is more than 1, then this is heavier, this is lighter. So let us find out the value. वो value अगर 1 से less आएगी तो ये lighter है. Okay. कितनी आएगी? Let us see. Mass is equal to density of aluminium. How much is the density of aluminium? 2.7. 2.7 into area of aluminium, we don't know area of aluminium, into length of aluminium L divided by density of copper. Density of copper 8.9 into area of copper into length of copper, which is equal to length of aluminium. Since these two lengths are equal, they cancel. And what we get? 2.7 AL upon AC. ये देखिए, this comes here, AL upon AC is equal to 2.63 upon 1.72. ये AL upon AC की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. So this will be 2.7 upon 8.9 multiplied by 2.63 upon 2.63 upon 1.72. अब इनको हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया. इसकी हमने कैलकुलेशन की. ये कैलकुलेशन आ गई 2 2 4 3. दिस इज 7.1 डिवाइडेड बाय 8.9 इंटू 1.72 कम्स टू 15.3. ओके. इसको ये आ गया मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ कॉपर. इफ वी मेक इट सिंप्लीफाइड, then this comes to mass of aluminium, mass of copper is equal to, इसको divide कर दिया, this comes to 1 upon 2.2. This is the ratio of both the masses. इसका मीनिंग क्या है? दो पोल के बीच हमको एक तार लगानी है and we want electricity to go from this pole to this pole. Either we use aluminium or copper. लेंथ तो दोनों में बराबर लगेगी, करेक्ट. हम चाहते हैं कि दोनों में हीट लॉसेस बराबर हो, तो दोनों का रेसिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए? सेम. दोनों का रेसिस्टेंस सेम. इस एग्जांपल में क्या है? लेंथ सेम, रेसिस्टेंस सेम. मार्केट से हम जाकर एल्यूमिनियम वायर लाएंगे, कितने किलो लेनी पड़ेगी? 1 kg. और अगर कॉपर लेके आएंगे तो कितना मास लेना पड़ेगा? 2.2 kg. कॉपर आएगा 2.25 किलो और एल्यूमिनियम कितना लगेगा? 1 किलो. एज सच कॉपर बहुत महंगा है और एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है. अगर कॉपर 300 रुपए किलो है तो ये 600 रुपीज आ जाएगा, और एल्यूमिनियम 150 रुपए किलो, ये 150 का होगा और ये 700 का होगा. सो कॉपर इज वेरी कॉस्टली कंपेयर टू एल्यूमिनियम व्हेनेवर वी वांट टू ट्रांसमिट. और दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है. सो aluminium is very cost effective. Therefore we use aluminium for transmission. जबकि हमको क्या बोला जाता है? The specific resistance of aluminium, specific resistance of aluminium is this 2.7, और कॉपर का कितना है? 1.72. Which is a better conductor? Copper is a better conductor, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी कम होती है. देन व्हाई डू वी यूज एल्यूमिनियम? बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. इसके एरिया को हम मोटा कर देंगे. सी एरिया 2.6, उसके बराबर कॉपर का कितना एरिया? 1.7. पर जब हम इसको भी लेते हैं तो भी
इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड कॉपर इज वेरी कॉस्टली कंपेयर टू एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम फॉर द सेम रेसिस्टेंस एंड लेंथ, फॉर सेम resistance and length, aluminium is more cost effective. More cost effective. So that's why we will use aluminium. तो इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, and now